बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस रिसर्च आर्टिकल की समरी पेश करेंगे, उस आर्टिकल का टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ द ग्लोबल सिस्टम। इस आर्टिकल के राइटर्स हैं डॉक्टर जमान मजीद ओदा एंड डॉक्टर समीर जासम राधी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में राइटर्स कहते हैं कि इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत या इमरजेंस सेकेंड क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में हुई बाय जॉर्ज पॉल, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एआई का इस्तेमाल करते थे। एलन ट्यूरिंग ने हेल्प की बेम मशीन इन्वेंट करने में, जो डिसाइफर करती थी, एंड एलन ट्यूरिंग इन्वेंटेड द मेथड ऑफ कंप्यूटर इंटेलिजेंस एंड मशीन। 1943 में वारन एंड वाल्टर बैट्स ने सिंथेटिक रेटिनल न्यूरॉन्स मॉडल डेवलप किया, जो 3 पिलर्स पे बेस करता है। पहला उसका पिलर है बेसिक फिजियोलॉजी, दूसरा उसका पिलर है न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, और तीसरा लास्ट जो पिलर है ट्यूरिंग्स मैथमेटिकल थ्योरी। इन 1950s प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी मैथमेटिक्स स्टूडेंट मार्विन मैन्स्की, he was able to implement the first computer to use artificial neural networks। और 1956 में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई एट डार्टमाउथ कॉलेज, जो इस नतीजे पे पहुंची कि फर्स्ट फॉर्मल टर्म फॉर द लॉन्च ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को लॉन्च किया गया। साइंटिस्ट जॉन मैककार्थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानता है था, वो कहता है कि इट इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग स्मार्ट मशीन्स, स्पेशली स्मार्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। राइटर्स एआई के गोल के बारे में बताते हैं कि एआई इज टू प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंट मशीन्स एंड रोबोट्स capable of performing complex tasks using reflexive processes similar to those performed by humans, such as thinking, learning, creating, and communicating। और AI was for the purpose of creating new technologies, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी स्पीड, efficiency, intelligence to accomplish daily tasks, and develop AI techniques to bypass human intelligence। राइटर्स कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज बताते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक वो है इंटीग्रेशन विथ अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस एज डिस्पैरेट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एआई है एप्लीकेशंस आर ड्यूअल यूज, जैसे कि मिलिट्री एंड सिविलियन हो सकती है। AI provides a multiplying effect of the force by enhancing human capabilities। फिर है चेंज
the way information is understood, processed, and analyzed, and improve the quality of information. पांचवी characteristics है AI exceeds the time factor in terms of speed. छठी characteristics है AI contributes to the creation of new industries and the creation of new jobs. Writers लिखते हैं कि AI is one of the outcomes of the fourth industrial revolution. अब देते हैं, राइटर्स बताते हैं कि AI का यूज इन द 21st सेंचुरी क्या है। कहते हैं कि AI has expanded significantly due to the emergence of GPU instead of CPU. Digital transformation of internet connected devices that are key source of big data. The spread of World Wide Web globally. The development of smart robots for doing work that has not been programmed before. They are super intelligent robots with the ability to learn, to deduce, and perform several tasks automatically without previous programming. The development of artificial retinal neurons as well as the ability of special conscious AI technology to create social environments and connect people in local spaces. AI के बारे में बताते हैं कि AI टेक्नोलॉजी overcomes geopolitical barriers, means it enhances globalization, concept of globalization. This has contributed to the transition of AI from science fiction to reality. शुरू के सफर में technological investment and opening up of new horizons of our AI to employ in multiple fields. जैसे AI क्लाउड कंपनीज हैं, सच एज एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, Amazon है, गूगल है, अलीबाबा है, हवाई है, टेंसेंट है। अब दो ऐसे बिलीफ हैं AI के बारे में कि पहला बिलीफ है कि the effects of AI machines and smart robots will eventually reach a stage where they control the world and therefore difficult for humans to control. दूसरा सेक्शन ऐसा है, वो बिलीव करते हैं कि स्मार्ट मशीन्स हैव पॉजिटिव रिपरकशंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ एंड विल कंट्रीब्यूट टू अचीव prosperous future of security, peace and well-being. Some of the most important mechanisms of the global system बताते हैं जो AI के डोमेन में आते हैं। एक है इकोनॉमिक मैकेनिज्म। इसके बारे में राइटर्स कहते हैं कि द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम इज लिबरल बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ फ्री ट्रेड एंड प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ग्लोबल एंड रीजनल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आती है, G20 आ जाती है, यूरोपियन यूनियन आ जाती है, आसियान आ जाती है, शंघाई आ जाती है, ब्रिक्स आ जाती है, एपेक आ जाती है, नाफ्टा आ जाता है, कोमेसा आ जाता है एंड GCC, जिनमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, बायोलेटरल एंड रीजनल ट्रेड ट्रीटीज हैं, बिजनेसमैन आए, इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट्स हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म में कलेक्टिव सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री अलायंसेस आते हैं, जिनमें नेटो है,
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज हैं, एनपीटीज हैं, एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स to exchange security expertise and information and establish military bases. चौथा रूल है for the dissemination of democracy, human rights and self-aid treaties. चौथा है a global system based on intelligent technology or technologies as a result of the fourth industrial revolution. पांचवा है a global system based on the globalization of the American culture. Implications of AI on development of the global system. बहुत इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल का हिस्सा है। पहला हिस्सा है इम्प्लीकेशन का, evolution in the nature of actors and structure of the global system, जिसके बारे में AI कहता है कि AI has contributed to reducing the functions of nation state, eroding borders and geographical barriers between countries and shifting the state sovereignty from national sovereignty to the people's sovereignty. With the increase in the strength of transnational companies, जिनमें ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Google, Alibaba, Hawaii, and Tencent. They have become strong and independent geopolitical actors engaged in the economic and social interactions and act as business entities. They have also been able to impose sovereignty over the digital space thanks to the power of its algorithms and services provided to its users, reaching to 4.7 billion people in 2020. दूसरा है, in addition, AI technologies have contributed to the following. वो क्या contribution है? एक contribution है कि giving small countries a chance to take their place in the global system. दूसरा AI का contribution है कि it provides the opportunity for non-state forms and illegal groups to play a role in the world order through the ability of these groups to weaken and threaten the functions of the state and disrupt some of its organs due to its enormous financial capabilities that enable it to keep up with and employ advanced technology represented by AI. दूसरा implication है developments in the capabilities of the global system in the field of science, scientific and methodological knowledge. AI technologies have contributed to the availability of broad database and the availability of information production and design. The development of analysis, interpretation, and conclusion processes, each access to knowledge and the speed of transmission of ideas. कहा जाता है कि artificial intelligence has also worked to digitize information and increase technological innovations and scientific patents, establishing many research centers and advanced scientific laboratories. इसी तरह AI is contributing to the development in various fields of the political, military, economic, medical, and engineering and sports sciences. Third implication है AI का in the military field. On the security side, writers कहते हैं कि knowledge and complete solutions have contributed to the development of digital security means and forensic tools that include speech analysis, voice manufacturing, detection of forgery, impersonation and electronic extortion,
that helps to speed up data matching at security and border checkpoints and airports, and the development of intelligence services and monitoring devices that include fingerprint, AI, and voice in the security investigation process, and the development of databases, information software tools, and security tech logistics. AI also has the ability to simplify complex processes and contributes to preventing criminal and terrorist activities. फोर्थ implication AI का है मिलिट्री साइड में. AI has contributed the use of drones to follow enemy movements and direct remote communications, to change the cognitive aspects of war, to develop the means of cyber warfare and sophisticated air defenses, the development of submarine-based maritime sensor networks, intelligence satellites capable of monitoring the launch of missiles, and the development of anti-satellite missiles. Fifth, in the economic field, AI has contributed to the development of the economic capabilities of the countries through the automation of factories. Recent study में देखा गया है कि AI is able to add 16% or about $13 trillion in 2030 to global economic output, an annual increase of about 1.2%. AI is a new production factor that contributes to increased economic growth, cost reduction, and risk reduction through the following. वो नंबर 1 पे है completing complex physical tasks. दूसरा, AI completes the workforce and improves the capacity of workers and thus increases the capacity of efficiency. तीसरा है AI promotes innovation and spreads to all industrial businesses. 6 है in the political field, developing modern diplomatic means, जिनको digital diplomacy कहा जाता है, based on virtual space, negotiating, exchanging views and discussions between the diplomats and ambassadors, and improving communication between governments and foreign public by reducing language barriers between countries is yet another smart contribution of AI. मिसाल के तौर पर Chinese Foreign Ministry announced its plan to use AI technologies in BRI to facilitate the work of diplomats and to benefit from the information and data provided by AI technology. Medicine 7 implementation है medicine and health sciences में. AI technologies have contributed to mitigate the physical and human effects and damage caused by corona pandemic by collecting and analyzing epidemiological, clinical, and genetic data, developing strategies to improve resources, designing effective analysis tools, rapidly diagnosing the epidemic, strengthening surveillance, follow-up, and predicting the developmental stages of infection and identifying the effects on humanity. Evolution and nature of wars and threats. इसके बारे में फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर कहते हैं कि AI is more dangerous and deadly than nuclear weapons because of the inability to control robots on the one hand and the scale of destruction caused by smart weapons, which exceeds the destructive capability of the nuclear weapons on the other hand. Evolution in the nature of interaction in the global system. US in the world leader in AI has achieved technological excellence by the help of many specialized research centers in the field. US believes that ceding leadership to China or Russia or other foreign countries could have serious implications for its national security. China is the #1 competitor to the United Nations.
और China's funding for AI starts up about 48% of world's total project financing, surpassing the United States of America. व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट कहते हैं इन 2017 में कहते हैं कि those who own and control AI have the ability to control and lead the world. और Russia looks forward to converting 30% of its military equipment into robots by 2025. और रशिया ने नवंबर 15 2021 में Russia's first intelligent satellite rocket was launched. और 2017 और 18 में इसराइल, कनाडा, जापान, सिंगापुर, यूएई, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, यूके, यूरोपियन यूनियन कमीशन, South Korea and India issued several plans and strategies to promote and develop AI technologies. Thank you.